Hello everybody, hope you all are doing great and I am back again here today. आज जिस book के साथ मैं हूँ, I believe that this book is not just something that has to be read by a reader. Rather, this book is something that has to be read by every man more than a woman. So yeah, today I am with India's first daughter, Draupadi by Vamshi Krishna. And Vamshi Krishna is in IIT and he is a young guy. And you know what? I'm highly impressed कि जिस तरह से उन्होंने इस किताब को लिखा है और एक फीमेल कैरेक्टर को समझा है, दैट इज समथिंग आउट ऑफ माय लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट ही हैज़ डन एन कमेंडेबल जॉब। सो 2019 और 19 में हम सब ने बचपन से महाभारत के बारे में सुना है, पढ़ा है, देखा है, बट 1920 में सौरभ राज जैन ने जहाँ पे कृष्णा का रोल प्ले किया था, दैट दैट महाभारत एपिक, उसके प्रति हम सब अट्रैक्ट हुए थे एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ देम। एंड उस सीरीज के रिलीज के बाद, when this book Draupadi was released, without a second thought, I just went on and ordered this book for me. And after reading the book, I could feel that I'm reading my own head. मैं वही सारे लाइंस एंड वही सारे assumptions एंड वही सारे एनालिसिस को पढ़ रही हूँ जो मेरे खुद के दिमाग में थे, एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस राइटर। सो लेट्स सी टुडे इन दिस बुक रिव्यू वील बी ट्राइंग टू एनालाइज कि क्यों ये किताब, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, एवरी मैन डज नीड टू रीड, दैट इज वॉट समथिंग दैट वी आर गोना सी टुडे इन दिस बुक रिव्यू। क्यों महाभारत एपिक देखने के बाद भी आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, एंड मैंने क्यों बोला कि ऑल द मेन आउट देयर शुड डेफिनेटली गो फॉर द्रौपदी बाय वामशी कृष्णा। द रीजन इज द काइंड ऑफ एनालिसिस ही हैज डन बीइंग अ मैन इज नेक्स्ट लेवल। सो वो मुझे बहुत पसंद आया, जिस तरह से उन्होंने एक एक कैरेक्टर को एनालाइज किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द्रौपदी के मन में क्या चल रहा था, एंड द्रौपदी एज अ वुमन उस टाइम पे क्या सोच रही थी, एंड व्हाट ऑल बैटल शी वाज गोइंग थ्रू इन हर हेड, वो उसने ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है बुक में। That what has kept me glued throughout the book. So the first one I'll talk about is Yudhishthira. Of course, we all know that Yudhishthira was the epitome of dharma, जहाँ पर वो डाइस के गेम पे पहले अपने आप को दाव पे लगाते हैं और हार जाते हैं, फिर अपनी बीवी को दाव पे लगाते हैं, फिर भी हार जाते हैं, एंड उसके बावजूद when her sari is draped off in the whole assembly, अपने सर नीचे करके पांचों पांडव जिस तरह से वहाँ अपने धर्म को निभा रहे थे, that was a question mark. देन 13 साल वनवास से वापस आने के बाद भी जब उनके पास एक ऑप्शन था दैट दे शुड गो फॉर द बैटल फील्ड, दे सेड, युधिष्ठिर वाज द वन टू डिसाइड दैट नो, हमें शांति चाहिए। उन्हें द्रौपदी वाज forced to come up and explain him that this is not your dharma, what kind of example you're setting for the upcoming generation, तब जाके वो बैटल फील्ड के लिए रेडी होते हैं। सो युधिष्ठिर एज अ पर्सन हियर अपने सिर्फ धर्म को फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट हैज बीन क्वेश्चनड बाय द राइटर एज वेल एज यू एंड अस, ऑल ऑफ अस हैव सीन महाभारत, एंड हम सब ने अपने दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया था। देन देयर कम्स अनदर कैरेक्टर ऑफ कुंती. Kunti was an amazing mother-in-law. She had a daughter-in-law that was Draupadi. She was the strongest woman. And she realized it that her mother-in-law is another strongest woman. The reason was Kunti supports her for having 5 husbands, and उन्हें explain करती है with multiple examples. वहाँ पर एक example है उद्दकला का, जो उद्दकला अपनी माँ को देखते हैं किसी और पार्टनर के साथ जाते हुए, तो अपने फादर से क्वेश्चन करते हैं कि why aren't you stopping this, and उसके फादर कहते हैं कि you know what, every woman has the right to go with any partner, I cannot stop this. उद्दकला काफ़ी नाराज़ होते हैं इस चीज़ से और पूरी दुनिया को एक तरह का श्राप दे देते हैं कि इफ़ इन द फ्यूचर एनी पार्टनर, irrespective of a male or a female, cheats with another partner, this would be considered as a sin, as a woman is killing her child in the womb. So वहाँ से ये rules and regulations and restrictions society पे लग गए, and Draupadi was explained in a very generous way and बहुत supportive way में by her mother-in-law, which allows her to take forward the family and her 5 husbands. Then there comes another and the most amazing character, which the book has it all, Draupadi. So Draupadi was born of fire, and I think अगर हम सब ने महाभारत देखी, हम सब उसके फैन रहे हमेशा, and she was somebody who was always and always judged for just having 5 husbands. So द्रौपदी की बैक स्टोरी क्या थी रीइनकार्नेशन की, वो भी मुझे पहली बार ये बुक को पढ़ के पता चला। उसके बाद Draupadi had the thing in her head that she was always in trouble because of her beauty. I think हम जनरेशन की लड़कियां, if the women are listening, they will be relating this with me, that if you are beautiful, you will be always in trouble. आपके आसपास you'll always have this lecherous men having eyes on you. Specifically, if you are alone, if you have nobody with you, they'll always have an eye on you.
ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड वो नज़रें देख के आप कितनी भी स्ट्रांग हो, आपको अंदर से जो फियर होता है ना, वो कहीं ना कहीं द्रौपदी के दिमाग में क्या चल रहा है वो इस बुक में लिखा हुआ है। दैट्स व्हाट आई सेड एवरी मैन शुड रीड दिस, दैट हाउ आर यू मेकिंग अ वुमन फील when you have a wrong eye on her. So Draupadi was always in trouble because of her beauty. And there's a very specific, I was shocked that how Vamashi being a man has written this, that एक आदमी के पास एक औरत को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ होता है, आप बहुत एक्साइटेड होते हैं जस्ट टू इम्प्रेस योर वुमन और इम्प्रेस द गर्ल यू लाइक, but at the same time you are not spot enough to handle the rejection from her. Why is this so? It's not it's obvious everybody has their own choices, but if a girl rejects you, if she friend zones you, what will you do? Will you take it positively? No. आप कॉन्स्पिरेसीज करेंगे, आप उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन करेंगे, आप गेम खेलेंगे, आप प्लान करेंगे, आप रिवेंजफुल हो जाते हैं. सो जितने एक्साइटेड और जितने स्पॉटिंग एज अ मैन यू शो टू द वर्ल्ड, दैट आई एम अ मैन, आई वुड इम्प्रेस दिस गर्ल, एंड इफ द गर्ल इज नॉट इम्प्रेस्ड, यू स्टार्ट कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट हर. यू हैव नो strength to handle the rejection, and इसकी वजह से there is no point in investing time and efforts and resentment, जो कि आज के डेट में 99% ऑफ आदमी करते हैं. अपना दिमाग आप वहीं लगाते हो and you make the woman's life hell out of nothing. Next important thing about this book is Krishna. Of course, there is no analysis for Shri Krishna, but Krishna said this very clearly in the whole book at the end, that everything is fair in love and war. Of course, because the way the things were going on, war was important, and this all happened out of love. Somewhere or the other, he had Arjun married her sister Subhadra. That's against a beautiful thing. So yeah, that's what Krishna had for the world to say, that everything is fair in love and war. And he also has given an example to the world that, if the person against you is like Duryodhan and Dushasana, you have to be Krishna. You have to use your head. You have to play. You have to undergo Mahabharata. So this is an amazing book, I'd say. I had just loved this book. Pamashri Krishna is having my heart now. So मैंने नोट मेकिंग की है, बुक को पढ़ा है. आपको ये बुक पढ़ के बहुत मज़ा आएगा. आपको जब आप when you'll try to understand what Draupadi had in her head as a woman, and what all battle she has gone through in her whole life. That's why we know her today. We know her as an epitome of the strongest woman, and I believe that every woman out there who's listening out there, you have to be strong at whatever comes out on your way. So yes, of course, to all the men out there, to all the students out there who has not seen Mahabharata, please go and read the amazing, बहुत amazing way में पूरी story describe की गई, summarize की गई है. So everybody should go and read this book of Vamashri Krishna. This book has a thumbs up from my side, and I have loved reading this book, and I'm pretty sure that you too will love reading the same. So that's all from my side here today. I'll be coming again with another book. So till then, stay connected, stay reading, and happy reading, everyone.